the relative strength? What is RSI? Let's start. What is RSI and how to plot it? RSI is, full form of RSI is relative strength index. Relative strength index, or just RSI, is a relevant, very powerful tool in technical analysis. It's an indicator, technical indicator. It was developed by J. Wells Wilder. RSI is a leading momentum indicator which helps in identifying a trend reversal. RSI indicator oscillates between 0 to 100, and based on the latest indicator reading, the expectations of the market are set. The term RSI can be a bit misleading as it does not compare the relative strength of two securities. It compares the strength of the movement versus the volume. The gain and loss, uska relative strength bahata hai. RSI will not compare two securities. It will just track the movement of that securities through the average gain and the average losses. The relative losses and the relative gains. इसलिए इसको RSI बोलते हैं. But instead shows the internal strength of the security. As I said, it shows the internal strength of the security. RSI is the most popular leading indicator. It's a leading indicator. अभी तक हमने moving average पढ़ा था. Moving average was a lagging indicator. RSI is a leading indicator. There are two types of indicator we will study. One is a leading indicator, जो हम लोग को पहले बताएगा about the movement and we can catch it. And lagging indicators are which will tend to tell us the movement a bit on a slow basis. This is the difference in leading and lagging indicators. So this is a leading indicator which gives out the strongest signals during the periods of sideways and non-trading ranges. The formula for RSI is as follows. RSI is equal to 100 minus 100, 1 plus RS. What is RS? RS is called the relative strength. The relative strength is average gain by the average loss, right? So the average gain by average loss is the relative strength index. So RSI का formula क्या है? Just for academic purpose, 100 minus 100 by 1 plus RS. This is how RSI is calculated. Now, what is the rules of RSI? If the RSI is fixed in an overbought region for a prolonged period, look for buying opportunities instead of shorting. The RSI stays in the overbought region for a prolonged period because of an excess positive momentum. कभी-कभी क्या होता है? There's a good bull momentum going in the market, and the RSI can indicate that we are in overbought position. तो उस समय we start shorting, but don't short it. Overbought position can be overbought for a quite long period of time. So we have to take advantage of the overbought position and keep our bullish positions intact. Okay. The RSI is fixed in an oversold region for prolonged region. Okay. Similarly, RSI can be oversold for a very long time. So look for selling opportunities instead of buying. It's for 14 period, 14 days. Rahulji, it's for 14 days average. Okay. Because of an excess positive momentum. If the RSI is fixed in an oversold region for a prolonged period, look for selling opportunities. If the RSI value starts moving away from the oversold value after a prolonged period, look for buying opportunities. For example, the RSI moves above 30 after a long time may mean that the stock may have bottomed down. Hence, a case of going long. बहुत देर तक market oversold था. RSI was below 30. So if it is below 30 for a long period, then it changes track and goes above 30, then we'll take a long position. Similarly, if it was for a prolonged period overbought position and the RSI is coming down from 70 towards 69, 68, 60, 50, then we'll take a short position. This is how we know the market is overbought or oversold, when to short and when to enter, when to exit. So let's see the practical example of RSI, after which we'll touch the Bollinger Bands. Let's open the TradingView platform. Everybody, I request to open at a TradingView or investing.com, whatever they are using. Let's see the Nifty 50 chart.
Let's keep it as a daily chart. Everybody is open technical, open trading view. Please type yes. Has everybody open trading view with the Nifty chart? Others, please. Okay, great. Now we will see the go to the indicators here and we'll select RSI. RSI. We'll select relative strength index, this one. Okay. RSI type कीजिए और relative strength index को type कीजिए. वो दबाइए. Press that. So you get a chart here, which is the RSI chart. थोड़ा इसको expand कर लेते हैं. So you can see here RSI value will be between 70 and 30. 30 and 70. If it goes above 70, there will be overbought zone. If it goes below 30, it will be oversold zone. Right? For some time, as I said, RSI can be prolonged period के लिए above, can be overbought. जैसे ये लाइन है, पर्पल लाइन RSI की लाइन है. This RSI line was above 70 for a prolonged period of time. So when it crossed above 70, you can see the market here. Here, the market was in a bull trend, right? Till here. It is overbought till here. So after it fell down to from 70, then the correction started. You can see correction started. It went up, broken to 50 line also. 50 is the median line. 50 also broken. Then there was a big correction. Then it found support at 30. Again from 30, you can see here, the market is at 30. Then again it reverses back and it's oversold at 30. Then again it bounces and touches 70. So we have to see when it is oversold or it is coming out of overbought position downwards below 70, then we'll short. When it is oversold, we'll buy at 30, right? 30 touch करेगा, 30 से move करेगा, next candle जो बनेगी, उसके बाद हम लोग buy करेंगे and we'll ride our position till 70 or 80. Till time this overbought position is there. RSI concept is clear to everybody. How to read it? सेतु जी, आपने जो चार्ट बताया इसमें येलो लाइन भी है. येलो लाइन क्या चीज का? That is moving average, simple moving average. Simple moving average जो पढ़ा था हमने, right? 20 day का simple moving average. Okay. It moves along the RSI. So अब इसमें एक पॉइंट बताने का को मेरे को जरूरी है. हमने सीखा था ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, राइट? एवरीबॉडी रिमेंबर हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन? गो टू दिस पार्ट, ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन. सो आरएसआई में भी एक ट्रेंड लाइन होती है. वी विल connect 2 points. Say it is oversold here, right? So this is the lowest point. तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे. फिर नेक्स्ट पॉइंट का है, लोएस्ट पॉइंट का है यहाँ पे, तो ये हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे. So you can see when the RSI ट्रेंड लाइन में है तो एक ट्रेंड फॉर्मेशन कंटिन्यूड है. Here the trend is not breaking. इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है. The RSI line is not breaking this trend line. I drew this trend line joining these two basic points. So यहां से हम लोग इस पोजीशन को राइड करेंगे. But here the RSI broke the trend line. So we will start taking our bullish position को काट के हम bearish position में आ जाएंगे when trend line is broken. Clear to everybody? This point is clear?
बेसिकली ये ट्रेंड लाइन के ब्रेक करने के बाद हमको सेल करना, आरएसआई की ट्रेंड लाइन बनाएंगे हम, उसके बाद हम सेल करेंगे, राइट? सिमिलरली फॉर एन ओवरबॉट पोजीशन वी कैन ड्रॉ अ रेजिस्टेंस लाइन. This is the highest point where the resistance came. We will join the next point here. दूसरा पॉइंट मिला हमको, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, राइट? सिमिलरली हमने ये ट्रेंड लाइन हमको यहां पे मिला, हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी. क्लियर? सो व्हेन द आरएसआई का ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, it tried to move up but it again went down. So trend line ये रेजिस्टेंस लाइन है, इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे चल रहा है मार्केट, राइट? तो करेक्शन आएगा. When the trend line is broken on the upside, you can see there is a, when this trend line is broken on the upside, you can see there is a pullback. So ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है. ये बेरिश ट्रेंड का रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, इसको तोड़ेगा तो मार्केट फिर पॉजिटिव होगा, आरएसआई, तो मार्केट ऊपर जाएगा. और यहाँ पे बेरिश ट्रेंड लाइन है, जब इसको तोड़ेगा तो मार्केट नीचे जाएगा. क्लियर? ट्रेंड लाइन, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन इन आरएसआई. आरएसआई में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करे, क्लियर टू यू? बट वो दिसंबर के समय जैसे वो सब रेजिस्टेंस तोड़ा था, बट उतना ऊपर गया नहीं, देखिए ये यहाँ पे रेजिस्टेंस तोड़ा है ना, यहाँ पे ये देखिए, उसके बाद करेक्शन खत्म हो गया, देखिए लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, फिर इट वेंट साइडवेज, यहाँ पे साइडवेज जा रहा है थोड़ा दिन के लिए, उसके बाद अभी फिर ऊपर जा रहा है. द अप ट्रेंड स्टार्टेड बट इट वाज साइडवेज, देन द मूवमेंट स्टार्टेड इन जनवरी. बट वो आपके साइडवेज में भी एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आ गया अराउंड. या साइडवेज ट्रेंड है, लेकिन डाउन ट्रेंड है. लेकिन जो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया, मतलब अब मार्केट ओवरसोल्ड नहीं है, मार्केट अब मतलब ओवरसोल्ड ज्यादा हो चुका है. ट्रेंड लाइन ब्रेक करती हमको जो शॉर्ट पोजीशन हम लोग चला रहे थे यहाँ पे, उसको काट देंगे, क्योंकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है. यस, एक तरीके से डबल बॉटम भी हो गया क्या? यस एग्जैक्टली, दिसंबर और यहाँ पे वापस आके फिर ऊपर गया. यस यस यस, डबल बॉटम भी है. एंड वी हैव टू एग्जिट पोजीशंस व्हेन ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा आरएसआई, तो हमको पोजीशन को एग्जिट कर लेना चाहिए. उसके बाद मार्केट साइडवेज जा सकता है, लेकिन एक अप ट्रेंड चालू होगा उसके बाद, मतलब डाउन ट्रेंड खत्म हो जाएगा. ओके, राइट? सिमिलरली आपने अप ट्रेंड में भी देख लिया, जब अप ट्रेंड तोड़ रहा है तो मार्केट कितना करेक्शन मार रहा है. अभी तक करेक्शन में ही है. नाउ इट टच द 30 लाइन अगेन ओवरबॉट को, एंड इट इज trying to break on the upside, but still it is failing. 40 टच करके फिर नीचे आ रहा है. So there is no clear trend right now. अभी sideways market है. और मेरा जो कॉन्सेप्ट मैं यूज करता हूं वो ये है कि जब RSI 30 से ओवरसोल्ड पोजीशन पे आएगा, फिर 40 टच करेगा, मैं उस पर नहीं पोजीशन लूंगा. When it crosses 50 लाइन, 30 क्रॉस बनाया, फिर 50 को क्रॉस किया, तो 50 क्रॉस करने के बाद मैं पोजीशन लूंगा टिल 70 और 80, राइट? आई विल नॉट टेक पोजीशन फ्रॉम 30 to 50 बिकॉज देन मार्केट कैन अगेन बी साइडवेज और रिवर्स, राइट? यहाँ पे भी देखिए, ये रेजिस्टेंस को तोड़ा, लेकिन 50 क्रॉस नहीं किया, तो मैंने पोजीशन नहीं लिया, वापस नीचे आया. जब 50 क्रॉस किया, तब अप ट्रेंड क्लियर था, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक क्लियर था, 17,000 से लेकर 18,600, तब मैंने पोजीशन ली है, राइट? तो मेरा मेन आरएसआई में कैसे, द वे आई यूज इट, व्हेन इट इज ओवरसोल्ड, आई मतलब शॉर्ट पोजीशन हट जाइए, सेलिंग से निकल जाइए, फिर वेट कीजिए, जब ये आरएसआई 50 के ऊपर क्रॉस करेगा, देन यू टेक अ बाय पोजीशन टिल 78. क्लियर? सिमिलरली, व्हेन द आरएसआई इज below 50, then only take short position.
Don't take short position from 70 to 50. Take short position at 50 to 30. And take long position from 50 to 70 or 80. This is the way I use RSI. You clear on this method? Everybody is clear what I said right now? 50 क्रॉस करने के बाद जब 80 जाएगा या 70 जाएगा तब तक हम पोजीशन कैरी करेंगे. 50 is a clear trend. And 30 to sir, 50. बोलिए. ये मतलब इसको होल्ड स्ट्रेटेजी कैसे रखने का रहेगा? जैसे कि अभी तो ये नया पोजीशन लेना है तो बाय करना है, या बाय किया हुआ है तो सेल करना है वैसा. बट जैसे कि अभी मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में दिख रहा है, तो वेदर वी शुड सेल और होल्ड, वो वाला पोजीशन कैसे पता चलेगा? अगर आपने पोजीशन सेल कर रखा है, आपको ये यहाँ पे निकल जाना चाहिए था. जब आपने आरएसआई स्टडी किया होता तो ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही थी ना, तो आपको पोजीशंस निकल जाना चाहिए था कि हमको शॉर्ट टर्म पोजीशंस को निकाल देना है. उसके बाद वेट करना है हमको कि जब 50 के ऊपर जाएगा तो हम वापस एंटर करेंगे मार्केट. मार्केट इज अगेन यस शॉर्ट पोजीशन टेकन फ्रॉम 50 to 30. यस 50-30 और नीचे आएगा 28. कभी कभी जब मार्च में लो हुआ था तो 18-19 चला गया था. टिल देन वील कैरी आवर पोजीशंस टिल द टाइम अगेन 30 के ऊपर नहीं जाता, तब तक हम लोग पोजीशन से कैरी करेंगे. यस सेलिंग शॉर्ट पोजीशन मीनिंग सेलिंग. या अतुल जी. तो सर मतलब अगर सपोज मैं 30 to 50 के बीच में बाय कर लिया हूँ और या फिर 50 to 70 के बीच में सेल कर लिया फॉर अ डाउन ट्रेंड. नहीं 50 पे आप राइड करेंगे, 70-80 तक जाके आप सेल करेंगे, मतलब उस पोजीशन को काट देंगे. बट अगर मैं सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से 30-50 के बीच में मैंने लिया पोजीशन, आज लिया बेचना या इंट्राडे करने के हिसाब से, तो वो 30 to 50 के बीच में अगर ले लिया तो होल्ड करके अज्यूमिंग कि ये राइट करेगा कि नहीं, वो स्ट्रेटेजी कैसे पता चलेगा? डेली का जो आरएसआई होता है वो अलग होता है, और जो आपका मिनट चार्ट में आरएसआई अलग होता है. राइट. आपको अगर मिनट चार्ट में देखना है तो ये 1 मिनट में ही बनता है आरएसआई. ये देखिए. ओके. बट इससे कुछ मिनट चार्ट है, ठीक है. अगर आपको इंट्राडे ट्रेडर है आप, तो ये मिनट चार्ट है, मैं इसको बता रहा हूँ. जस्ट सो ये 30 मिनट्स का चार्ट है. राइट. अभी यहाँ पे देखिए मार्केट सुबह 30 के आसपास आ रहा था नीचे की तरफ. सुबह ओपन हुआ यहाँ पे 8:45 पे, मार्केट वेंट बिलो 30. देन व्हेन इट केम अबव 30,
then it took resistance at 50. But I didn't take position here. When it crossed 50 in intraday, then you take position and ride the trend. And when you see it's not sustaining, you sell it. Still, it is not crossing 50. So today intraday में आपको buy position नहीं लेनी चाहिए. हालांकि कुछ सेक्टर्स में मूवमेंट था, निफ्टी पे पोजीशन नहीं लेना चाहिए. हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी की पोजीशन नहीं लेना चाहिए था क्योंकि 50 वाज नॉट क्रॉस टेंडेंसी. Okay. So for intraday we need to see minutes वाला chart, 1 minute या 30 minutes. जैसे स्टॉक्स में देखते हैं, जैसे आज अच्छा स्टॉक था एक हिंदुस्तान जिंक जो 12% चला, तो उसका अगर आप देखेंगे वो पोजीशन कब लेना चाहिए था. वो आज 11% चला था, इंट्राडे में बहुत अच्छा स्विंग दिया है, मैंने पोजीशन भी लिया था. तो ये देखिए हिंदुस्तान जिंक का चार्ट है आज का. देखिए when it crossed around see on 28 February means Friday, it crossed the RSI 50. Until then, till now, it is above 80, above 70. It is an overbought zone, but it is sustaining the overbought position. So we can ride this trend. It can be overbought for a few days. Then when it goes below 70, then we can sell it. So we can draw a trend line here also. So we'll join 2 points. This is the first point where it crosses above 50, and this is the second point. So when it breaks below this trend line, that is below 65 or below 62, then we can short it. Otherwise, till the time it stays above the trend line, we'll keep on riding this. So minute chart में अपने ऐसे study कर सकते. Yes. So with short you mean अगर हमने खरीद लिया तो वो 62 वो जो या 65 जो आया तो वहां पे हमको बेचना है. हाँ, ये ट्रेंड लाइन बनाई हमने, लेकिन 65 पे नीचे जाएगा तो हमको इंट्राडे में बेच देना, मतलब पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना या शॉर्ट कर लीजिए जैसा आपको अच्छा, whatever suits you. Okay. Right. So RSI is clear to everybody. Any other doubts in RSI if anybody has? Quick question. Any doubt, please? So if it is clear, we'll move to next concept. सेतु जी, RSI और SMS से क्या रिलेशन है इसका? सिंपल मूविंग एवरेजेस से भी कुछ रिलेशन है क्या? Yes, मूविंग एवरेज से भी रिलेशन है. मूविंग एवरेज आपको बाद में बताएगा और RSI को पहले बताएगा. इंडिकेटिंग पहले इंडिकेट कर देगा. जैसे अगर हम मूविंग एवरेज को लेके बनाते हैं इसको, just a minute, give me a second. Just if we move moving averages in this, let us plot moving averages here. फटाफट अपना बना लेते हैं हम लोग. ये 9 day,
20-day. $50-day. ठीक है. Now, what we had discussed in moving averages, let's put the RSI also. What we had discussed in moving averages is when the fast moving average closes below the slow moving averages, we will short. So यहाँ पे देखिए ये जो 59 डे की लाइन है उसने 50 डे को छोड़ 20 डे को तोड़ा, 20 डे को तोड़ा, यहाँ पे देखिए इधर यहाँ एग्जैक्टली यहाँ पे जब RSI नीचे जा रहा है तब इसने 50 डे को तोड़ा, लेकिन RSI ने पहले इंडिकेट कर दिया, इसलिए लीडिंग इंडिकेटर यहीं पे इंडिकेट कर दिया इस पॉइंट पे, ना कि इस पॉइंट पे. यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि मार्केट इज ओवरबॉट. इसने बाद में इंडिकेट किया, मूविंग एवरेज ने थोड़ा लेट इंडिकेट किया, तो मार्केट यहाँ आ चुका है. बट कंफर्मेशन कब मिला हमको? जब यहाँ पे 50 के नीचे तोड़ दिए, 50 के नीचे तोड़ा तब ब्लैक लाइन वाज the 9-day average is below the 20-day and the 50-day moving average. So market is in a bear position right now. Now when the RSI will cross 50, then the black line will slowly move towards 50-day and 20-day. Then we can easily see RSI अगर 50 क्रॉस करेगा, यहाँ भी जंप किया है, अगर 50 क्रॉस करेगा तो correction will be over and then the market will move towards another upswing. This is the relation. यहाँ पे लेट बताया, RSI was a faster indicator. Both are in the same direction, but RSI is a faster indicator than the moving average. Clear to everybody the RSI concept?